Sir, your mic is off. So, for attention, this is the symbol of fuse, FUSE, fuse. Complete name इलेक्ट्रिक फ्यूज बच्चे. और ये क्या होता है बेटे? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस. इट इज अ सेफ्टी डिवाइस. अब आपको टीचर समझाएंगे. ये सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज. सभी बच्चे देखो, फ्यूज के बारे में टीचर बताने लगे. बेटे मान लीजिए हमने ये सर्किट बनाया और यहाँ ऑन ऑफ स्विच लगा दिया जिसको हम की भी बोलते हैं, और यहाँ पर हमने फ्यूज लगा दिया. अब देखो, टीचर ने यहाँ पर फ्यूज लगाया. जानते हो क्या होगा बेटे? मान लीजिए कभी ऐसा टाइम आया, जैसे ही मैंने इस स्विच को ऑन करा, करंट यहां से निकला और इस बल्ब को ग्लो करा दिया, इस फैन को उसने चला दिया और करंट इधर से आ रहा है. ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है बेटे? यहाँ पर एक सॉकेट है, उसमें ये घर का छोटा बच्चा फिंगर डाल देता है. अपनी सॉकेट के अंदर ये चाइल्ड फिंगर डाल देगा. जैसे ही ये चाइल्ड ने इस सॉकेट के अंदर अपना फिंगर डाला, तो इस बच्चे की बॉडी में करंट आ जाएगा और वो करंट आगे जमीन में चला जाएगा. इसका मतलब है कि इस वायर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा और इस बच्चे का डेथ भी हो सकता है. तो इसके बचाव के लिए क्या करा होता है? हमने ये फ्यूज लगाया, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती. जैसे उसने प्लग में अपना फिंगर डाला तो क्या होता है? एकदम से करंट निकलता है. हमने इस फ्यूज की इस वायर को ऐसा बनाया होता है बेटे, ऐसा बनाया होता है कि एकदम से ये पिघल जाती है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. वायर ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटे? लो. जैसे ही करंट निकलता है, मैं बताना चाहूंगा बेटे, जितना करंट ज्यादा निकलता है उतनी हीट ज्यादा होती है. करंट, एक करंट का सिंबल क्या होता है? आई. आई किसका सिंबल है? सभी बच्चों ने याद करना है, करंट का. इसका यूनिट क्या होता है करंट का बेटे? कैपिटल ए. कैपिटल ए का क्या मतलब होता है? एम्पियर. तो जैसे करंट ज्यादा निकलेगा, एकदम से ये तार गर्म हो जाएगी, हीट ज्यादा हो जाएगी. ये करंट ज्यादा कब होएगा? जब ये बच्चे का फिंगर अब प्लग में डाल देगा, बच्चे सॉकेट में डाल देगा, और हीट ज्यादा होने से ये वायर, फ्यूज की वायर ऐसे पिघल जाएगी और बीच में से टूट जाएगी. जैसे ये बीच में से प्लग की वायर टूट गई बेटे, देखो ये प्लग की वायर, ये सॉरी फ्यूज की वायर टूट गया और यहाँ पर एयर गैप आ गया. एयर गैप हो गया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया. करंट में से, सर्किट में से करंट जाना बंद हो जाएगा. सर्किट में से करंट जाना बंद हो जाएगा और डेथ होने से बचाव हो जाएगा. ये बच्चा जो डेथ हो सकती थी, इसका बचाव हो जाएगा. अब मैं सारी बात को इंग्लिश में बताऊंगा, ध्यान से सुनना. इलेक्ट्रिक फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस. इट कैन प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. और डेथ की वजह से जो डेथ होती है, उसके लिए ये वर्ड लगता है इंग्लिश का, इलेक्ट्रोक्यूट. ये याद रखना बेटे, इलेक्ट्रोक्यूट. द चाइल्ड में बी इलेक्ट्रोक्यूटेड, मीनिंग डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. fatal accident, death due to electric current. But when the child will put his finger in the socket, huge current will flow through the body of the child. As a result, the wire of the fuse will warm up because the melting point of the wire of the fuse is quite low. It quickly melts, and as a result, when wire of the fuse melts, there comes the air gap. Circuit becomes open. No more the electric current will flow.
एंड द चाइल्ड विल बी प्रोटेक्टेड। इस बच्चे की बिजली की वजह से डेथ नहीं होगी। और एक बात बताना चाहूंगा बेटे, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है वही काम, सेम जॉब, सेम जॉब इज डन आजकल, उसको बना, उसका नाम है एमसीबी। कोई बच्चा है क्लास में जो एमसीबी की फुल फॉर्म बता सके? एमसीबी, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। डाउन डाउन डाउन। कितने बच्चे हैं? तो सभी बच्चे जानते हैं सर, इसका नाम है मिनिएचर सर्किट बोर्ड। यस, मिनिएचर। हाँ, पद्म भूषण में एक ग्रीन कलर वाला टी शर्ट का बच्चा बैठा है, सेंट्रल लाइन सरदार बच्चा, पद्म भूषण। प्लीज कम ऑन द माइक बेटे, स्विच ऑन योर माइक एंड टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, शाबाश। इसका भी बिल्कुल वही काम होता है जो फ्यूज का होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, फ्यूज में जब ये वायर मेल्ट हो जाती है हमें फिर से नई वायर लगानी पड़ती है, लेकिन एमसीबी में स्विच जो होता है, स्विच वो डाउन गिर जाता है, हमें उसे ऊपर उठा के फिर से सर्किट को ऑन करना, बस इतना ही फर्क होता है बेटे, और कोई फर्क नहीं। तो जिन बच्चों को आज इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूज एंड एमसीबी समझ आ गया, they will raise the right hand. Please, if you have understood, please raise your right hand. Shabash bete. Please respond the teacher. If you have understood fuse and MCB, please raise your right hand. बहुत अच्छे। डाउन डाउन डाउन। अब एक और मैं सर्किट बनाऊंगा और देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ध्यान से देखना, मैंने एक सेल ले लिया और इस सेल को ऐसे रख दिया, गॉट इट। और फिर मैंने एक दूसरा सेल ले लिया, उसको मैंने इस तरह से रख दिया। कौन बच्चा बताएगा ये दोनों सेल्स जो है, सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैं या पैरेलल में? इन सीरीज, इन पैरेलल, दोनों में से कौन सी बात सही? कोई बच्चे कहते हैं सीरीज तो वो एक फिंगर खड़ी करे, जो बच्चे कहते हैं पैरेलल में वो डबल फिंगर। पद्म भूषण करेक्ट आंसर, शाबाश। सारे डाउन। पद्म भूषण का सभी का आंसर सही है, मैक्सिस से सही है आंसर बेटे। नोबल के बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? नोबल के बच्चे, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, ओके। 5 बच्चे नोबल में जवाब दे रहे हैं, सही, करेक्ट। परमवीर चक्कर करेक्ट, ऑस्कर करेक्ट, शौर्य बिल्कुल करेक्ट, पद्मश्री सारे बच्चे करो, सारे बच्चे हाथ लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट पद्मश्री। और पीजेड करेक्ट, शाबाश। इसको हम बोलते हैं बेटे सर, सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा याद रखना बेटे, ऐसे में जो सेंटर वाला टर्मिनल होता है वो प्लस का होता है, और जो बॉटम पे होता है वो माइनस होता है, और जो दूसरा सेल होता है उसके पहले वाले सेल के माइनस से दूसरे वाले सेल का प्लस लगा, ओके। तो इस तरह से हमने एक वायर फिर यहां से निकाली होती है, एक वायर फिर यहां से, गॉट इट। तो इसको अगर सिंबॉलिकली दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, देखो नेगेटिव का मतलब छोटी लाइन, पॉजिटिव का मतलब बड़ी लाइन। एक सेल हो गया, अब मैं दूसरा सेल बनाऊंगा, दूसरा सेल बनाने लगा हूं, देखो नेगेटिव का मतलब छोटी लाइन, पॉजिटिव का मतलब बड़ी लाइन, और इसको भी बना दिया। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, यहां जोड़ दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो कोई बच्चा बोले सर अगर ये ए और ये बी टर्मिनल है
तो उसको अगर सिंबॉलिकली दिखाना हो तो आप सेम ए टर्मिनल को यहां दिखाओगे और बी को यहां दिखाओगे। बिल्कुल। अगर इसी डायग्राम को सिंबॉलिकली दिखाना हो तो ऐसे दिखाऊंगा, सभी बच्चे ड्रा कर ले। अगर एक्चुअल फिगर दिखाना है तो ऐसे। जो हमारी बल्ब वाली बैटरी होती है, जिसमें हम टॉर्च होती है, जिसमें सेल डाल के लाइट ऑन करते हैं, टॉर्च के अंदर ऐसे डाले होते हैं सेल। गॉट इट। अब मैं एक सर्किट बना रहा हूं, देखते हैं कौन सी क्लास के बच्चे उसको बताते हैं कि वो क्या है। ये देखो, मैंने एक सेल ले लिया ऐसे, और दूसरा सेल ले लिया बेटे मैंने ऐसे, और तीसरा सेल भी ले लिया मैंने ऐसे। अब इन तीनों सेलों को मैंने क्या करा, एक कॉपर की वायर ली, यहां से ले ली, यहां से ले ली, यहां से ले ली, और इन तीनों कॉपर की वायर्स को यहां जोड़ दी, और तीन कॉपर की वायर और ली, उनको यहां से जोड़ दिया, यहां से जोड़ दिया, यहां से जोड़ दिया। अब यहां पर मैंने दो टर्मिनल बनाए, एक्स और वाई। बताओ, इस सर्किट को जो एक्स और वाई के बीच में मैंने तीन सेल लगाए हैं, इस सर्किट को क्या नाम देना चाहिए? शाबाश। एक ही बच्चा बता रहा है, शौर्या में दो बच्चे। आजा बेटे, सरदार बच्चा शौर्या में, प्लीज कम ऑन द माइक। सरदार बच्चा शौर्या में, माइक पे आकर बताओ। और कोई बच्चे का हाथ ही नहीं खड़ा पूरी पूरी सेक्शन में। देखते हैं ये बच्चा सही बताता है कि नहीं। हाँ बेटे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्किट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑस्कर में भी एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है। बोलो बेटे, क्या बोलेंगे इसको? बेटे बोल नहीं रहे शौर्या वाली लाइन में। ओके, नहीं बताया। पद्मश्री में एक बच्चा बेंच सीट पे खड़ा हुआ है। आजा बेटे आजा, पद्मश्री आजा आजा। आप बताओ इस सर्किट को क्या बोलेंगे? बैटरी। बैटरी तो बोलेंगे बेटे, बैटरी तो इसको भी बोल सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या होना चाहिए? बैटरी तो ये भी है। इस सर्किट को क्या बोलना चाहिए? कोई अच्छे से बता नहीं पा रहा, अभी तक आंसर नहीं आया। देखते हैं कौन बता। एक बच्चा बता रहा पद्मश्री पद्म भूषण में, वो रेड टी शर्ट पीछे। आजा बेटे, रेड टी शर्ट वाला बच्चा पद्म भूषण में। देखते हैं ये बच्चा क्या बताता है। क्या है बेटे ये? बोल नहीं रहे पद्म भूषण, फिर से बताओ। नहीं बता रहा। पद्म भूषण में सेंट्रल लाइन में एक सरदार बच्चे का हाथ खड़ा है। आजा बेटे, माइक पे बताओ। देखते हैं, माइक को पहले ऑन करना है, फिर उच्च से बताना है। पहले ऑन करके रुकना है 2 सेकंड। क्लोज सर्किट है। है जी? क्लोज सर्किट। क्लोज्ड सर्किट कह रहा है इस बच्चा। और अभी अच्छा आंसर नहीं आया। शौर्य में, शौर्य में सेंट्रल लाइन फर्स्ट बच्चा, सेंट्रल लाइन फर्स्ट बेंच स्पेक्स वाला बच्चा। शाबाश। बताओ, शौर्य में सेंट्रल लाइन वाला बच्चा बोल क्यों नहीं रहा? बोल ही नहीं रहा, पहले माइक पे आ गया फिर बोल ही नहीं रहा बच्चा। उसके साथ वाला बच्चा आ जाए, जो अभी बच्चा उठ के आया है उसके साथ वाला। हाँ बेटे आप बताओ। आपकी आवाज ही नहीं सुन रही मेरे को शौर्य में। क्या बोलोगे इस सर्किट? आपका माइक खराब है बेटे, बैठ जाओ। आपकी क्लास का और कोई बच्चा, एक बच्चा पी जेड सेक्शन में, एक ही बच्चे का हाथ खड़ा है पी जेड में। शाबाश। पी जेड में है कोई बच्चा? वो बच्चा डर गया, उसने हाथ नीचे कर लिया। तो इसको कोई भी बच्चा नहीं बता पाया। तो याद रखना बेटे, इसमें मैंने पॉजिटिव टर्मिनल सभी सेल्स के
एक ही पॉइंट पर जोड़ दिए कॉपर वायर से, और नेगेटिव टर्मिनल सभी सेल्स के एक ही पॉइंट पर जोड़ दिए, तो इसको हम बोलेंगे 3 सेल्स connected in parallel, 3 cells connected in parallel, parallel, यानी टीचर ने पैरेलल सर्किट समझाया। ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, 2 cells connected in series। तो यहां से टीचर ने इस येलो लाइन के ऊपर ऊपर समझाया हाउ टू कनेक्ट दी सेल्स इन सीरीज, और नीचे नीचे बताया हाउ टू कनेक्ट दी सेल्स इन पैरेलल। ओके बेटे, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि मैंने ये किस चीज का सिंबल बनाया है और ये इस वक्त ऑन है या ऑफ है? एक सिंबल मैंने नीचे बनाया। मैं अभी सिंबल नंबर 1 की बात कर रहा हूं। कौन बच्चा बताएगा व्हाट आई हैव शोन इन सिंबल नंबर 1? एक बच्चा बोल रहा है ओके ओके, नोबल में, नोबल में सेंट्रल लाइन फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच। हाँ आ जाओ बेटे आ जाओ। नोबल में सेंट्रल लाइन सेकंड, बेटे क्या दिखाया? ऑप्शन की। बिल्कुल सही। इस बच्चे ने इसको ओपन की बोल दिया। ओपन की का मतलब है यहां से करंट दूसरी साइड पे नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में एयर गैप अभी आ गया। अच्छा, ओपन की को एक शब्द और भी बोल सकते हैं। कौन बच्चा बोलेगा? ओपन की कैन आल्सो बी नोन एज व्हाट? परमवीर चक्र, सेंट्रल लाइन थर्ड बेंच। एक ही बच्चा आ जाए बेटे माइक पे। परमवीर चक्र सेंट्रल लाइन, देखते हैं छोटा सा बच्चा है, देखते हैं जवाब सही देता है कि ओपन यार की। क्या? है जी, अरे यार क्या? एयर गैप तो बोल सकते हैं, लेकिन इस सिंबल को क्या बोलेंगे? एयर गैप तो मैंने ही बता दिया, इसका एक नाम और भी होता है, नहीं बताया। ऑस्कर में एक गुड़िया सेंट्रल लाइन, आ जाओ बेटे सेंट्रल लाइन में। हाँ हाँ आपको ही कह रहा हूं। हाँ बताओ बेटे, ऑस्कर में। बोलो दोबारा से बोलो। हाँ आप बताओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ऑस्कर में एक बच्चा बताने लगा, देखते हैं क्या बोल। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस सिचुएशन को आप ये भी बोल सकते हो, ऑफ ऑफ स्विच, यानी ऑफ स्टेट ऑफ स्विच, इसमें से करंट पास नहीं हो सकता। ओके, फिगर नंबर 2 को कौन बच्चा बताएगा ये क्या है? फिगर नंबर 2, पद्मश्री में से एक बच्चा, हाथ खड़ा सबसे ऊंचा ऐसा स्ट्रेट वाला, वो पीछे पहली लाइन। आ जाओ बेटे आ जाओ, बताओ जल्दी आ जाओ, फिर क्या बोलोगे इसको आके? शाबाश। इसमें दोनों टर्मिनल से टच कर रहे हैं आपस में, ये याद है। की। बिल्कुल सही, इसको बोलोगे आप क्लोज्ड की। और इसी को आप एक चीज और भी बोल सकते हो, क्या? ऑन स्विच, ऑन स्विच। ऑन स्विच में से करंट इधर से जाएगा अगर, तो दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन ऑफ स्विच में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में एयर गैप आ जाती है। एयर जो होती है वो करंट की इंसुलेटर होती है, अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देती। ठीक है, तो करंट कैन नॉट पास थ्रू एयर गैप। शाबाश, ये तो आप जीत गए। एयर गैप, ये भी आपको समझ आ गया बेटे, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। योर अटेंशन, देखते हैं कौन बच्चा मेरे को बताता है कि मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं, दोनों का फर्क क्या है। टीचर लिख रहा है सेल्स, और एक सेल को लिख रहा है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरे को लिख रहा है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल।
कौन है क्लास में ऐसा बच्चा जो मेरे को नंबर 1 प्राइमरी सेल बता सके? क्या एनी बॉडी आउट ऑफ द होल सेक्शन? सिर्फ परमवीर। अच्छा अच्छा, परमवीर चक्र में हाथ खड़े हैं। आजा बेटे, लास्ट में एक बच्चा परमवीर में, परमवीर में फर्स्ट लाइन लास्ट बच्चा। आ जाओ, जो आपको ही कह रहा हूँ। हाँ शाबाश। और इसके बिना और किसी सेक्शन में हाथ नहीं खड़ा, लेकिन मैक्स एसए में खड़ा है। मैक्स एसए में आ जाओ बेटे, आप भी आ जाओ। प्राइमरी ट्राइसेस। वेरी गुड वेरी गुड, और अच्छा बताना चाहिए। अभी असली बात नहीं आई कि खिड़की के पास जो बच्चा बैठा है मैक्स एसए में। हाँ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज कम। टेल, प्राइमरी सेल क्या होता है? मैक्स एसए में। हाँ जी, क्या होता है? नहीं बता। हाँ जी, फिर से बताओ बेटे। माइक ऑन करने के बाद थोड़ी देर रुकना होता है, फिर बोलना। सो मैक्स एसए का डिस्कनेक्शन हो गया, इसका मतलब है, चलो एक मौका और देते हैं। शौर्य चक्र में एक सेंट्रल लाइन फर्स्ट बेंच, सेंट्रल लाइन फर्स्ट बेंच। हाँ, ये रेड बॉटल के साथ वाला बच्चा, यस। आ जाओ, बताओ क्या होता है। वेरी गुड, ये इसने सही होता है। इसका मतलब होता है बेटे, प्राइमरी सेल जो मार्केट से खरीद के एक ही बार यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड वंस ओनली। एक बार ये डिस्चार्ज हो जाए तो इसको फेंकना पड़ेगा, नया सेल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है बेटे, सेकेंडरी सेल को हम घरों में आम लैंग्वेज में चार्जेबल सेल भी बोलते हैं। अगर ये एक बार खत्म हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो इसको दोबारा से चार्ज करा जा सकता है। लिखो, सेकेंडरी सेल्स आर रीयूजेबल। रीयूजेबल क्यों? बिकॉज दे कैन बी चार्ज, recharged, they can be recharged। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, सेकंड पॉइंट भी हो गया। ये मेरे को लगता है इतने बच्चों में से कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा इसका। अगर फिर भी कोई जवाब दे तो मेरे को मजा आ जाए। मुश्किल क्वेश्चन। जब टीचर कहते हैं कि सेल डिस्चार्ज हो गया और कभी कहते हैं चार्ज हो गया, तो आपने ये बताना है कि अगर कोई टीचर ये बोलता है कि सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल डिस्चार्ज हो चुका है, अब ये करंट नहीं दे सकता, तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? क्या मीनिंग क्या है? सेल तो वही है देखने में, फिर हम इसको चार्ज कर लेते हैं, तब ये करंट देने लग जाता है, चार्ज सेल। हमारे मोबाइल फोन में भी जो बैटरी है, उसको चार्जर से चार्ज कर लो तो वो मोबाइल फोन को चलाने लग जाती है। जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तो नहीं चलाती, देखने में वो वैसे ही लगती है। कौन बच्चा बताएगा इन दोनों में फर्क क्या है? किसी भी सेक्शन में किसी भी बच्चे का हाथ नहीं खड़ा, सिर्फ मैक्सेसे में। अच्छा है, नीचे खड़ा है मैक्सेसे में, येलो टी शर्ट। आ जाओ बेटे, येलो टी शर्ट मैक्सेसे में, और एक शौर्य चक्र में एक ही बच्चे का हाथ खड़ा। आ जाओ बेटे, तुम भी बताओ। आ जाओ आ जाओ। पी जेड में भी खड़े हैं काफी बच्चे के हाथ भी। पी जेड, पी जेड में भी एक बच्चा माइक पे आए, लास्ट में, लास्ट बैठा। पी जेड, बताओ बेटे, मीनिंग क्या होता है? नहीं सुना, ध्यान क्लियर नहीं सुना बेटे, अच्छे से नहीं बोल पाए। जो बच्चा इसका जवाब दे देगा वो सारे सेक्शनों में सबसे ब्राइट बच्चा, मोस्ट ब्राइट। परमवीर चक्र में एक बच्चा हाथ खड़ा। आ जाओ बेटे,
परमवीर चक्कर आ जाओ प्लीज, ओनली वन स्टूडेंट इन होल सेक्शन, शाबाश। पीजेड बैच, पीजेड में भी है, तुम भी आ जाओ माइक पे। हाँ बताओ बेटे, परमवीर चक्र में क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? Battery that of second result. आ, सुनो, अभी इसका जवाब नहीं आया, इसका मतलब नहीं पता लगा। ध्यान से सुनो बेटे, कोई भी जो सेल होता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, केमिकल होता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रॉड लगी होती है। ये जो रॉड्स होती हैं, इनको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। और ये जो लिक्विड कंटेंट होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से सुनना, अगर तो इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है सेल का, ये वाला लिक्विड, अगर वो पॉजिटिव पार्टिकल, इसको आयन भी कह सकते हैं, एंड नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन पार्टिकल बोल सकते हो आप छोटी क्लास में, नेगेटिव आयन के रूप में पड़ा हो, तब हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट आयनिक फॉर्म में पड़ा है, आयनिक फॉर्म। जो इलेक्ट्रोलाइट आयनिक फॉर्म में पड़ा होता है, वो चार्ज होता है, वो हमारे मोबाइल फोन को चला सकता है। लेकिन जब डिस्चार्ज सेल हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब ये जुड़ जाते हैं तो एक ऐसी चीज देते हैं जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, वो तो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल। जब सारे का सारा लिक्विड न्यूट्रल फॉर्म में हो, ना उसमें कोई पॉजिटिव आयन हो ना नेगेटिव आयन हो, तब हम बोलते हैं कि ये बैटरी बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, कौन चीज? लिक्विड। उस लिक्विड का नाम क्या? इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ, जब इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जुड़ जाएं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएं, तब ऐसी बैटरी हमारे मोबाइल फोन को नहीं चला सकती, ये डिस्चार्ज स्टेट है। और जब किसी सेल में उसका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ आयंस, यानी कि आयनिक फॉर्म, तब वो हमारे फोन को चला सकते। सभी बच्चे लिख लो, सभी बच्चे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज सेल मींस इलेक्ट्रोलाइट्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और डिस्चार्ज सेल्स का मतलब इलेक्ट्रोलाइट आर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मैं यहां एक चीज और बता देना चाहता हूं अपने बच्चों को, जो पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन, उसको बोलते हैं केटायन, केटायन। जो नेगेटिव आयन होता है, उसका नाम होता है एनायन, एनायन। लिख लो सभी बच्चे। एक बच्चा था मेरा, छोटा था बच्चा, सिक्स क्लास का, पिछले साल, वो इनको भूल जाता था, सर कौन सा कैटायन कौन सा एनायन मेरे को तो याद नहीं रहता। तो मैंने उसको एक बहुत अच्छा मेमोरी टूल दिया था। ध्यान से देखो, मैंने उसको क्या मेमोरी टूल दिया था, शाबाश। मैंने उसको बोला बेटे तुम कैटायन की स्पेलिंग ऐसे याद करो, CAION। बच्चा कह रहा सर आपने टी छोड़ दिया। मैंने कहा बेटे टी की शक्ल देखो कैसी है, टी की शक्ल प्लस जैसी है, तो तुम यहाँ प्लस याद कर लो, प्लस याद कर लो। जो कैटायन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो दूसरा होता है एनायन वो नेगेटिव। देखो टी को टीचर ने प्लस बना दिया, मेमोरी टूल, मेमोरी टूल। टी की शक्ल प्लस जैसी होती है ना बेटे, तो मैंने इसको पॉजिटिव में याद करा दिया। उसके बाद वो बच्चा कभी नहीं भूला। गॉट इट? तो इस तरह से बेटे बाकी का लेक्चर हम अगली बार लेंगे।
जिनको आज का लेक्चर समझ आया, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स। शाबाश, शाबाश। नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, बाय बाय। चलो। And then start with the English. Okay, and I hope you all have this sheet. This is active and passive. Do you all have it? Active, passive, everyone. So here we come. You will see that it is like a very long one. So basically you have couple of things. First, you have to identify the sentences, whether they are active or passive. And then you have to identify the doer of the action. Whenever and wherever there is no doer of the action, you will put a question mark on these. And if there is a doer of the action, whether it is a active voice sentence or a passive voice, then what you have to do, you have to write the name. I can do the first one for you. Okay, the first one is Thomas feeds his dog. Okay. So Thomas feeds his dog. What kind of a sentence it is? White color. Which kind of sentence is this? Is it active or passive? Yes, I know everybody knows. Okay. Max says a middle row, second bench, that boy. Yes, come forward. Active. Very good. It is active. Okay. How did you identify it as active? How do you do that? What are the indications? Because the subject is the doer of the action. Okay. What is the subject doing? Feeding the dog. So this is the object. This is the subject. Thomas is the subject. This is the object. Okay. So this is the subject. This is the object. And Thomas is doing the action. So who's the doer of the action? Here, what will you write? Who's the doer of the action? Everybody knows who did the action. Yes, Oscar on my left, first bench. Yes, the girl sitting. Yes. Who's the doer of the action? Ma'am, Thomas. Very good. So it is Thomas. Okay, so Thomas has done the action. Okay, so even if it is converted into passive, the Thomas will remain the doer of action, because if we make it into passive, the dog was fed by Thomas. Okay, the position of object subject will change, but action will be done by Thomas only. Okay, so let us quickly do all these quick fatafat. And whenever you think there is no doer of action given, no specification, you can put a question mark there. And I will tell you why it is like that. Okay, I just want to make you understand certain things. That there are some times when you get such sentences and you get confused. You're like, oh my God, what do I do? Okay, I don't know what to do about it. And I have observed there were some mistakes, like, in some classes, children did make some mistakes. So I just want to clear that thing. That's why
this exercise has been added. Okay. The dog is fed by Thomas. This is who is now, this is, everybody knows, this is your passive. Okay. Yes. The position has been changed. Object has taken the place of subject. The meaning does not change. The tense does not change. Nothing, only the position changes. Okay. So yes, Paramveer Chakra said this third row, first bench, there is a boy who's raised the hand. Ajo beta. Paramveer Chakra. Yes, the boy who now put down his hand. Ajo, 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 come. Yes, very good. This is the object has taken the place of subject. The subject has taken the place by preposition. This has become verb 3, the normal rules. Yes. Yes. So this is passive. Okay. This is passive. And who is the doer of the action? Has the doer of the action changed? No. No. Okay. So this, I wanted to clear it because still the doer of the action is Thomas. Thomas is a name. Okay. Is a name, a Christian name. So the doer of the action is still Thomas. Thomas was feeding the dog, and here we say the dog was fed by Thomas. That means Thomas only did the action. Okay, so whether it is the passive or it is active, the doer of the action will stay the same. Okay, because nothing changes, only the words, the way it is mentioned, everything changes in that way. Neither the tense nor the sense. Okay, next one. The family went to the beach. The family went to the beach. The family went to the beach. How many of you have ever been to a beach? How many of you? Oh my God, a lot of you. Do you like sea? Yes? Lot of sand. Yes, but we love the waves. Okay. So the family went to the beach. What kind of sentence is it? Okay. Padma Shri, on my right, there is a little girl sitting on the third last bench. She's raised her hand. Aja. No, she's not raised her hand. Only I felt she had raised her hand. Okay. Sorry. Yes, Aja, Aja, Aja. She did not raise, but I want you to come out. Aja, come, come, come. The girl, little girl. Yes. Third last bench. She's sitting by the wall. Okay. No. Okay, Padma Shri, center. Huh. Yes. Come out. Come out, Beta. Come out. See how I spot everyone, each one of you. I'm looking at each one of you. I don't want to miss anyone. Okay. The family went to the beach. It is. It is? Is it Active. very good? And you will tell me this is active. Can you tell me who is the doer of the action? Who did the action? And the family. Very good. Perfect. The doer is family. The family. Okay. Okay. So we can write the family. Now, if we change it into passive, do you think they will change the doer of the action will change? No, it will stay the same. This was just to make you understand this. Now let's go to the next one. The letter was written by Marshall. The letter was written by Marshall. The letter was written by Marshall. Marshall is also a name. Okay. So who is the doer of action here? And which kind of sentences? Or Shaurya Chakra, on my right, that boy, sorry, that girl who's, yes, that boy. Yes, come, come, come. Is this passive or active? Yes, Bache? Okay, you had come. Next, you come. Okay, that boy who sat down. You can come.
Okay, Shaurya Chakra? Yes. This is passive, very good. Okay, but who's the doer of the action? Marshall. Okay, so about specifically why I said this, because I saw there was a mistake when the things were changed. Somebody had told me that dog was the doer of. They thought that the moment you shift everything, the doer of the action also changes. That was the major reason I had to include it to make it much more clearer. Okay, so very good. So doer of the action is Marshall. He is the doer of the action. Okay, next one. Okay, the game has been won by the blue team. The game has been won by the blue team. Passive or active? Okay, that boy who had come of Shaurya Chakra, come. Yes. The game has been won by the blue team. आप वापस क्यों चले जाते हो? Why do you go back? Okay, you can come for the next one. Yes. And who's the doer of the action here? It's blue team, because blue team did the action. Okay, they played the game, so it is the blue team. Next, the problem was solved. The problem was solved. Okay, Ajo, that same boy who keeps running back. Let him. Then the next one can come. The problem was solved. फिर वापस आ गए. Don't, you're giving away your chances. Okay, bolo. Okay, the problem was solved. What sentence is this? Huh? Passive. The problem was solved. Now see, in this sentence, I'll just write down here. Everybody pay attention. The problem was solved. Now see what happens here. किसी ने तो problem solve की होगी ना? It must be done by someone. एक किसी team ने, organization ने, some person, some boy, some girl, some organization. But problem, the main focus is here only on the problem, that it was solved. They don't. So here probably the doer of the action is unspecified. They haven't given, because it did not matter who solved the problem. The most important thing here was that the problem was solved. So the focus is on solving of the problem, not on who solved the problem. Okay, so here there is no doer of action. So you will put the problem was solved. We can, for your understanding, you can write by someone. Okay, so what kind of sentence is this? What kind of sentence is this? Passive or active? Okay, Mag say center row, that girl sitting. So the problem was solved. It is passive. Okay, because to make things clearer, you can write in the bracket by someone. So here it is not mentioned who solved the problem. So when you have this thing, you can write down on the blank, you can put this. Okay, and this is in passive sentences. Many times you will come across things like this where the doer of the action is not mentioned. Okay, and there can be various reasons. The doer of the action is not important. More focus is on whatever has been done. Like here, the problem was solved. So you have to, or it was irrelevant. Who did it? Whosoever did it, that it did not matter. Okay, so that is why you will get these kind of sentences. Don't get freaked out. Don't get worried. कि ये क्या आ गया? Don't get like that. Okay, next. The stuntman risked his life. The stuntman risked his life. Okay, Padma Bhushan. I want someone from Padma Bhushan.
Okay, there are a lot of Oscar children. On my left, there is a boy sitting who's raised his hand. Ajo. Yes. Okay, one of you can give me the answer for 7th and one of you can give me the answer for 8th. Okay? Then the boy who sat down can give me the answer for 8th Oscar. The stuntman risked his life. I'm active. Very good. Active. Okay? And please pay attention to how I speak. It is not active. We don't stress. वो पंजाबी में करते हैं हम. वैसे active, active, passive. Like, in English, we don't put stress on certain syllables. So this way, you will continually, if you do this, your pronunciation will become better and better. Okay? So the stuntman risked his life. This is active. Who is the doer of the action? The stuntman. The stuntman. The stuntman. Very good. Go back. Thank you. Oscar, the other boy who sat down, can come now. Yes? That boy, Oscar, the boy sitting on the second bench who had earlier raised his hand, Aja beta. The fire was extinguished. Similar kind of sentence. The problem was solved. The fire was extinguished. So यहाँ पे main चीज क्या है? The fire was extinguished. Okay. किसने करी? Nobody confirmed. Yes. It is passive or active? Passive. Active. Because it will be the fire was extinguished. The fire was, yes. Yeah, it can be like the fire was extinguished by the fire department, by the team, by him, by her, by anyone. But it is not, because nobody wants to know who extinguished the fire. The thing was that the fire was extinguished. Everybody knows what does extinguished means? Who knows? Okay. Paramveer Chakra, that boy sitting in the first bench, Aja, in the center row. Extinguish. When you extinguish your fire, extinguishers must be there in your school, in the halls. Yes. Dana. Yes. Could you please say again? Dana. What? Why I can't understand? It is basically आग को बुझाना. Okay. Extinguish means when there is a fire, it's very difficult to control fire. So we normally use like water, not on electric fires. If there is an electric fire, we'll go and switch off the main plug. If there is oil, then also we can't put fire, water on it. Then we have to douse it. Douse is the word in which we can put sand on it, oil or some fire with oil and all, or we can cover it so no oxygen goes and it goes. So we can discuss this sometime. Okay. And I'd like to hear your answers to this. Okay. So we will use different words and we can also learn different words. Very good. Thank you, Vita. The car was being cleaned by its owner. The car was being cleaned by its owner. Anyone in Oscar house? Why do I see children not raising their hands in Oscar house? Only 1 to 3. Okay. Yeah, there is a boy who's hesitant on my left. I think so. Towards the windows. He's sitting on the last bench. Uske piche koi nahi baitha hua. He raised his hand. Yes, the guy who turned around. Yes. Aaja beta fatafat. Come fast. Why do you have to turn around and look when I'm calling you? The one who raised his hand and now he's turning around and looking at a boy who's wearing a green t-shirt. I'm owner. Okay. What's your name? Aja. Aja. Sometimes, the camera plays tricks and I can't see the whole picture. Yeah. The car was being cleaned by its owner. Answer it. Passive or active? The car was, many of you must be doing at home.
पापा ड्यूटी लगाते होंगे, चलो कार साफ करो. Okay, how many of you clean, wash your cars? You give the services to your family. Many of you, I used to love washing my car. Yes. Okay. The car was being cleaned by its owner, whether it is an active or passive, quickly. Active. Ah, active. How? How? Can you please give me the reason why you thought it was active? Bhagya piche. Okay. Okay. There's so many in Paramveer Chakra. On my right, the boy sitting on the last bench. Aja. Paramveer Chakra. Yes. How do you identify? Beta, please pay attention to this. That how you can identify. This is the basic thing. The car was being cleaned by its owner. It is passive. And who's the doer of the action? Owner. The owner. Very good. Perfect. Okay. See, whenever you have the by preposition, okay, by the owner in the end, that is one way you can recognize is you have verb 3. Okay. So the car was washed. Okay. So it is verb 3. So this is like, ed wala verb. Now, next. It gets cold here during the winter. It gets cold here during the winter. What kind of sentence is this? Okay, Paramveer Chakra, I can see two boys, one in the last bench on my right and one in the last bench on my left. Dono aa jao. Dono aa jao. I'm active. It is active. Okay, it gets cold here during the winter. You cannot see verb 3. You cannot see by preposition. You know it is an active. It gets cold here during the winter. Now see, who's the doer of the action here? Who's the doer of the action? The next boy can say, is there anyone who's doing some action? I'm not given. Very good, not specified. Now see one thing more. Okay, sometimes यहाँ पर action हुआ है, but the doer is not important. यहाँ पे आपको सिर्फ information मिली है. It gets cold here. So this is a neutral sentence. Many times you will get these neutral sentences. Okay, so when it is a neutral sentence, you don't have a doer. Okay, it gets cold. Nobody is making the cold happen there. It happens. Okay, so it gets cold here during the winter. So nobody is the doer of this action because it is a neutral sentence. It is only imparting information. Okay, so when you have somebody asks you in a question, somebody will ask you your preference then also. Okay, so these kind of things you have to remember. It will make your active passive much more simpler for you. Okay, now let's go to the next exercise. Before we go to the next exercise, let me take you to rewrite the following past tense active voice sentences into passive voice. Okay. Okay, so this is only past tense, but it involves all the past tense, continuous past tense. Has like, perfect past tense. It has all the kind of past tenses. This one has present tense, all the present tense sentences. So you can quickly, they're all active voice. You have to change them into passive. Jaldi jaldi karke dikhao. Let me see kitni jaldi karte ho. Quick, fast, fast, fast. Fast, everyone. I know you will be able to do it. I know already hands are raised. I'll give you 2 minutes so that everybody can be on the same page and then we can start. Till then, let me erase this. Should I erase this?
Okay. So quickly. Okay. Paramveer Chakra, there are 3-4 children who are really eager. The one in red t-shirt, Paramveer Chakra, aajo. Yes, you. The first one. The first one is Ram writes a story every year. Story written every year by Ram. A story is written by Ram every year. Okay? It's not necessary, even if you write a story. ये वाली गलती भी बहुत सारे बच्चे करते हैं. Story is written. Who is the writer of the story? By Ram. It is not necessary every year. कि आपने every year को end में नहीं आने देना. Okay, that is not necessary. This is the basic sentence. Okay. So story was Ram writes a story every year. He writes a story every year. Okay. And that is what is the question. Ram writes a story every year. And then story is the subject. Object. It comes here. Is written by Ram every year. This stays the same. Okay. So by preposition aa gaya. Verb 3 aa gaya. Okay. The position has changed. Perfect. Okay. So where is the boy with that t-shirt? Paramveer Chakra. Okay. You did a good job. Okay. But you have to pay attention to this. Okay, bache? And this, if others have also made this small slight mistake. So, grammar is cruel. If we make simple mistake also, we get a big 0. And we don't want that to happen. Okay. Next. Shweta waters the plants in the evening. Shweta waters the plants in the evening. So let me focus on Paramveer today. Little bit. Then I'll come to Oscar. Okay, Max is here also. There's one boy. Okay, Paramveer Chakra. Okay. Middle row, third bench. Aja. Yes. I love you all when you all raise your hand. It makes me feel so happy. Okay. Plants are watered by Shweta in the evening. Very good. The plants are watered by Shweta in the evening. The plants are watered by Shweta. Okay, so change ho gaya. The subject went there. In the evening. Perfect. Okay, next one. Do you write poems? Do you write poems? Okay, Shaurya Chakra, the boy on my right. Yes. Ajo. Do you write poems? Come. Do you write poems? Question. Simple question is asked. Yes. Yes. Sorry. Okay. Do you write poems? Yeah. That was the fourth one. Okay. I missed a sentence. We can do it next. Okay. So do you write poems? You should go in the end. And what should come in front? Writing. That's the action. Yes. Do you write poems? The question. Do you write poems? Okay. So it's you. And this object is this. Object is, this is your subject, this is your verb, this is your object. So how will you change it? How will you change it?
Okay. What happened, sweetheart? Some confusion? Okay. Shaurya Chakra, middle row, center boy, who has raised his hand. आ जाओ. बेटे क्यों कंफ्यूज हो गए आप? The poem is written by you. आर बेटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही रहेगा. It will not change its form. So R, this object will come here. Poems. This will become verb 3, written by preposition you. Are poems written by you? So do will change. Do you write poems? Are poems written by you? Okay. So that is how. That is how you're going to change it. Okay. He does not play cricket. Simple statement. He does not play cricket. How many of you not play cricket? How many of you not play cricket? Sab khelte ho? Even the girls? Oh, very good. I'm very impressed. Do you have cricket in your school? Sports? You have a cricket team? You have a school cricket team? How many of you are there in the school cricket team? Cricket team. Oh, very nice. Very good. I have lots of sports people. Very good. Very nice. Okay. I love to enjoy. I've never played, but I do enjoy watching, like, all the matches and keeping myself updated. I like it. Okay. So next is he does not play cricket. It's hard to be an Indian and not play cricket. Okay, he does not play cricket. Who will come and who will tell me the sentence? Anyone from Nobel? Nobel House has been very quiet today. Okay, it's nice to be quiet, but I want some answers. Come on, get some answers. Give me some answers. Okay, middle row, the girl sitting in yellow t-shirt. Aja, bar. Yes. Nobel House or Nobel Room, whatever you call it. He does not play cricket. Yes. He subject है वो end में जाएगा. Cricket object है वो शुरू में आएगा. Okay. It's a negative sentence. He does not play cricket. So how will you say? It's such a simple sentence. Okay. He does not play cricket. Yes. क्या हो गया? Anybody else who would like to come? Okay, I want somebody else to come then if you're not ready to answer. Yes, please come. Because we have limited time, so we can't, Betty, why didn't you answer? This little girl in yellow t-shirt? Cricket is not played by him. Very good. Cricket is not played by him. Okay? He does not play cricket. Cricket is not played by him. Very simple. He So object will come here. This is subject, this is object. Okay. So this will become action, verb will become V3, that is ED, verb plus ED. Okay. Does not will play will become is not. Cricket is not played. Very good, beta. You said the right sentence. By him. By preposition. Okay. Very simple.
ऐसे थोड़ा थोड़ा फॉलो करोगे मजा आ जाएगा सब. You will come to know everything. Okay. Tracy does not do any homework. Oh my God. Tracy is in a problem. Tracy is a name again, does not do any. How many of you don't do your homework? Raise your hand. If you don't do your homework. No, everybody does? Oh. Padma Bhushan, the boy in green t-shirt. Aajao. I know you do your homework. Okay, come. Middle row, Padma Bhushan. Yes. Tracy does not do any homework. Tracy is a bad girl. Yes, please. Homework Yes. is not do any pressure. Okay. There were a couple of not you missed it. Like I won't say there were a couple of wrongs there. Okay, Shaurya Chakra middle row. There's a boy who's raised his hand. Acha. Any out the Tracy. Okay. So she does not do any homework. So here we will change any into no. No homework is done by Tracy. No homework is done by Tracy. Here you have to use your everyday spoken English also. Any homework? No homework is done by Tracy. Okay, next. What is your favorite pastime? What is your favorite pastime? कैसे करोगे इसको? What is your favorite pastime? Question है. Okay, Padma Shri, that boy who's raised his hand. आ जाओ आगे. आओ. Yes. What pastime is your favorite? What pastime is your favorite? Okay. See, this will not change. Okay. What is your favorite pastime will not change because the thing is that it is about preference and not action. Okay. It is about preference and not action. Whenever you will get anything about preference, well, like, this, that, then normally we don't have a passive for that. So this was again given here to make you understand that every single thing cannot be changed into passive. Okay, there are certain questions, there are certain that will not be changed into passive. So same goes for the next. So this will be no change, remains the same. Who is your favorite teacher? Preference. So this will also not be changed. Okay, this will also stay the same. So two things, remember this, whenever there is no action, whenever there is action, it will change. When there is no action, preference, opinion, then it will not change. Okay, next, where does this train stop? Where does this train stop? Who will answer this? Where does this train stop? See, it cannot be changed into passive, but you will write where are stops made by the train. Where does this train stop? Where are stops made by this train? Okay, so this is your where are stops made by. Where does this train stop? Where are stops made by this train? I hope everybody has written this. Next is, do you remember my name? Sorry, don't you remember my name? Don't you remember my name? Anyone who wants? Okay. Shaurya Chakra, aajo. Is my name remembered by you? Very good. Isn't my name remembered by you? Very good. Isn't my name
remembered by you. Okay. So there were two questions which could not be changed. They would remain the same because they were about preferences. What is your favorite pastime and who's your favorite teacher? I think so. We are done with the time and I have to close my class, but we are still left with the last part. Do it. We will discuss it in the next class. Okay. They are basically past tense, but they are like you will see they are of different, like, continuous, perfect, simple. So they are the three: continuous, simple, and perfect past tenses. So please go through them and do the statements and change them into passive voice. All are active, change them into passive and enjoy. Okay. This will be furthermore practice. I hope you all enjoyed the class and I'm happy that you all came out with good answers. Very good. Let's end the class now on a happy note and then bye. Bye, everyone. And have a good day. Okay? Study hard, play well. Okay, let me end the class.